So there's a block of mass, 5 kilograms, that is held in equilibrium near a vertical wall by 2 light strings and a horizontal force of magnitude x Newton. So you can see the figure. There is a vertical wall that's here. उसके ऊपर 2 strings attached हैं और एक block है दरम्यान में, उस पे कुछ forces लग रहे हैं. Now, what forces do we have acting on that block? We've got x Newton acting towards the right side. We've got 2 tensions. Now, we've got to be careful. Even though the angles are same, आप यहाँ पे देखें, these are 2 strings. These are 2 separate strings. इनकी tensions आपने equal assume नहीं करने हैं. They have to be different. Okay? Whenever we've got 2 different strings, we always assume different tensions. Okay? So we say, we've got T1 here, let's say. हम block के perspective से देख रहे हैं, block के perspective से T1 is going to be acting in this direction and T2 is going to be acting in this direction. These are 2 tensions that are acting. 3 forces हैं आपके पास. X right पे लग रही है, T1 यहाँ पे लग रही है, T2 यहाँ पे लग रही है. You have to find the tension in the lower string. So you want the value of T2 given that X equals 100. तो first part में उसने बता दिया आपको X की value 100 है. इसको यूज करके आपने T2 फाइंड करना, ठीक है? Now these are 3 forces. Those of you who know about Lamy's theorem, we could also use that. That's going to be very quick. But if you don't, the standard method of doing this would be to resolve the forces that we've got. ठीक है? Let's resolve the forces. X तो already horizontal है. Tension के components क्या हो जाएंगे? T1 के components. Let's figure them out. If this angle is 60, this is going to be 30, and this is also going to be 30. T1 के components क्या हो गए? Vertical component is going to be T1 sine 30. It's on the other side of the angle. वहाँ पे sine लगेगा. The component that is adjacent to the angle, we have cos there, T1 cos 30. ठीक है, ये T1 के components हो गए. And then we have components of T2. We've got one component acting vertically downwards. That is, that's what? That is T2 sine 30. And this component acting towards the left side, that is T2 cos 30. In fact, we are missing a force there. इसका weight भी तो है. So they're actually going to be 4 forces. Weight को include करके तो Lamy's theorem असली में नहीं apply कर सकते. यहाँ पे Lamy's theorem सिर्फ 3 forces के लिए होता है. We also have weight here. Weight include करके ये 4 forces हो जाएंगी. So that is not going to work. हमें resolve भी करनी पड़ती है. In any case, Lamy's theorem नहीं use करते यहाँ पे. Okay, so what's the weight? Weight is acting downwards. That is going to be 50 Newton. ये आपका weight आ गया. These are all the forces that we have acting on this. अब इनको resolve कर लें. इनको equate कर दें. We are in equilibrium. The block is in equilibrium. Equilibrium क्या मतलब है? Opposite forces equal होंगी. Left वाली forces right वाली forces के equal, upward forces downward forces के equal. So we look at horizontal forces and we look at the vertical forces. Now, what are the horizontal forces? We've got X, we've got T1 cos 30, we've got T2 cos 30. We've got some vertical forces, which are T1 sin 30, T2 sin 30, and 50. ठीक है? अब of course, क्योंकि आपने T1, T2 को resolve कर लिया at this point, इनको तो नहीं कंसिडर करेंगे, उनके कंपोनेंट्स कंसिडर करेंगे. ठीक है, आपके पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगे यहाँ से. लेट्स राइट देम डाउन. हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इक्वेट करके हम हमारे पास क्या आ गया? लेफ्ट साइड पे फोर्सेस क्या है? T1 cos 30 प्लस T2 cos 30. That should equal the forces acting towards the right side. There's only one, that's X. Vertical forces हमारे पास क्या होगी? Upward forces T1 sin 30. Downward forces are T2 sin 30. And 50 Newton. We've got these 2 equations. We can solve them to find the value of T2. X उसने बताया हुआ है आपको. X की value उसने कहा है आपको 100 लेनी है first part के अंदर. So let's do that. We have cos 30. Cos 30 क्या होता है? Cos 30 is square root of 3 over 2. So square root of 3 over 2 into T1 plus square root of 3 over 2 into T2. That equals 100.
And on the right side, we have T1/2 equals T2/2 because sin 30 जो है 1/2 होता है प्लस 50. ठीक है, हमें T2 फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, T2 को सब्जेक्ट बना के एक इक्वेशन से दूसरे में इनपुट कर देते हैं. T1 को सब्जेक्ट बना के T1 को एलिमिनेट करना है हमें, राइट. T1 को एलिमिनेट कर दें, so हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को, तो what do we get? We get T1 equals T2 plus 100. You can put this back in the first equation. यहाँ पे इनपुट कर दें T1 equals T2 plus 100 and see what you get from that. Square root of 3/2 into T2 plus 100 plus square root of 3/2 into T2, that equals 100. We have square root of 3/2 T2 plus square root of 3/2 T2, 100 minus 100 square root of 3/2. ठीक है, and you see what you get from this. Left side पे मेरे पास आ रहा है square root of 3 times T2. Right side पे what do we get? 100 minus 100 square root of 3 divided by 2. On the right side, I'm getting 13.397. And then T2 turns out to be this divided by square root of 3, which for me is 7.735. This is the tension in the lower string. You can leave it like this if you want. If you do want to round it off, that's going to be 7.74 Newton. To 3 significant figures. Is that okay? That was relatively straightforward, pretty standard. Let's move on to the next part now. Let's look at the next part. Find the least value of x for which the block remains in equilibrium in the position shown. Okay, now that's slightly tricky. Now what I'm going to do for that is I actually want to copy this figure somehow. So we're not going to do that. Where's the right side of this there? Okay, screenshot it. Okay, so this is the figure that we have. अब उसने क्या कहा है? Find the least value of x for which the block remains in equilibrium in the position shown. अच्छा देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया है, हमने अपनी forces को already resolve कर लिया. Let's actually just represent these forces here. Just try to understand what exactly is happening. We've got some downward forces. We've got weight of the object, that's 50 Newton. We've got a component of the tension acting upwards, T, so इसको हम represent कर लेते हैं, T1 कहा था हमने इसको. Yes, and this was T2. We've resolved these tensions. Upwards tension आपके पास यहाँ पे क्या आ रही थी? That was T1 sin 30. And the tension on the left side here was T1 cos 30. So then won't okay, so the question is, okay, how is it not going to be always in equilibrium? ये हमेशा इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा. इक्विलिब्रियम ब्रेक कैसे हो सकता है? इक्विलिब्रियम ऐसे ब्रेक हो सकता है. लेट्स अज्यूम अब ये 100 न्यूटन थी ना ऊपर वैल्यू जब वो इक्विलिब्रियम के अंदर था. आप ये फोर्स बहुत ही कम कर दो, लेट्स से आप ये 1 न्यूटन कर दो, ठीक है. अब क्योंकि वेट भी तो है ना नीचे उसका लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है. अब उसकी वजह से क्या होगा, आपकी ये फोर्स राइट साइड पे, इट्स नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट टू कीप
this string in a taut position, right? इसमें slack आ जाएगा exactly. So T2 will जो आपकी string 2 है नीचे वाली, that's going to slack. That's going to become slack. That's going to be a problem. Okay. So that's why it's not always going to be an equilibrium. There's going to be some minimum value जिस पे जाके आपका equilibrium break हो जाएगा. अच्छा, हमने इसको रिजॉल्व कर लिया था. T1 के कंपोनेंट्स निकाल लिए. T2 के कंपोनेंट्स क्या होंगे? They're going to be T2 sin 30 and T2 cos 30. Okay. Now let's try to understand कि उसने exactly क्या पूछा. Because this is the tricky part here is to understand the statement properly कि उसने इसको exactly किस तरह से interpret करना है. In the first part, this force was 100 Newton. ठीक है. अब 100 Newton right पे लग रही है. इसको बैलेंस करने के लिए आपकी दो फोर्सेस लेफ्ट साइड पे लग रही हैं that are going to keep this block in equilibrium. क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए. तो हम अगर फर्स्ट पार्ट में देखें हमने क्या किया था, हमने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो लेफ्ट साइड पे लग रही थी वो क्या लग रही थी, वी हैड दीस टू फोर्सेस एक्टिंग हियर ऑन द लेफ्ट साइड. इनको हमने इक्वेट किया था x के साथ. ओके, let me just copy that because that's still going to be the same. I'll just write that here again. Horizontally आपके पास अभी भी वही आ रहा है, T1 cos 30 plus T2 cos 30 that equals x. Horizontally आपके पास वही कंपोनेंट्स उसी तरह से बन गए हैं. इनफैक्ट वर्टिकली भी अगर आप देखें तो आपके पास वर्टिकली भी वही दो कंपोनेंट्स, वही आपके पास इक्वेशंस बन रही हैं. वर्टिकली भी क्या हो रहा है, we've got T1 sin 30 acting upwards and T2 sin 30 and 50 acting downwards. अच्छा, अब देखिए कौन सी फोर्सेस यहाँ पे होनी ही है इन एनी केस. मतलब टेंशन तो चेंज हो सकती है लेकिन क्या यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता? चेंज ये नहीं हो सकता इस ऑब्जेक्ट का वेट. वेट तो इसका चेंज नहीं होएगा. ठीक है, 50 न्यूटन नीचे को तो एक्ट कर ही रहा है. ठीक है, बाकी सारी चीजें अननोन है अभी जो हम देखेंगे कि उनको क्या करना है. बाकी सारी चीजें अननोन है लेकिन वेट तो हमें डेफिनेटली पता है 50 न्यूटन है. ठीक है, अब वेट को काउंटर करने के लिए कौन सी फोर्स है? वेट को काउंटर करने के लिए कौन सी फोर्स है? वेट को काउंटर करने के लिए देयर इज ओनली वन फोर्स दैट वी गॉट. वेट को काउंटर करने के लिए दैट इज T1 sin 30. T1 sin 30 is the only force that we've got that is going to counter this 50 Newton, the weight of the ring. ठीक है, ये उसको बैलेंस करेगी. अब T1 का ही कुछ पार्ट लेफ्ट पे लग रहा होगा, कुछ पार्ट लेफ्ट पे लग रहा होगा. कुछ कौन सा पार्ट लेफ्ट पे लग रहा है? T1 cos 30. T1 cos 30 लेफ्ट पे लग रहा है. अब जो लेफ्ट पे फोर्स लग रही है उसका काउंटर करने के लिए हमें राइट साइड पे फोर्स चाहिए, x न्यूटन. राइट, उसको काउंटर करने के लिए राइट साइड पे फोर्स चाहिए, दैट इज x न्यूटन. ये जो नीचे वाली फोर्स है T2, दैट इज सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा, दैट इज ऑप्शनल. मतलब T2 के बगैर भी आपका जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है. बिकॉज अगर हम T2 को इंक्लूड करते हैं तो क्या होगा? T2 को इंक्लूड करते हैं तो T2 का एक कंपोनेंट लेफ्ट साइड पे भी आ जाएगा जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है. और T2 का कंपोनेंट अगर लेफ्ट पे आएगा तो x की वैल्यू हमें और इंक्रीज करनी पड़ेगी. I hope I'm making some sense there. Let me write it down. That will make slightly more sense. And then vertically हमें कम से कम क्या करना पड़ेगा? इस 50 न्यूटन जो नीचे को फोर्स लग रही है इसको बैलेंस करना पड़ेगा. इसको कैसे बैलेंस करेंगे? जो आपकी अपवर्ड फोर्स है T1 sin 30, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इट हैज टू बी 50 न्यूटन. T1 sin 30 की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम वैल्यू हम कह सकते हैं कि दिस हैज टू बी एट लीस्ट इक्वल टू 50 न्यूटन.
50 से ज्यादा हो सकती है अगर T2 का कंपोनेंट भी आ जाए, लेकिन कम से कम 50 तो होना पड़ेगा उसको, बिकॉज इट हैज टू बैलेंस दिस वेट दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, इससे हमारे पास T1 की क्या वैल्यू आती है, T1/2 50, T1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आती है 100 Newton is the minimum value that you need for the tension in the upper string. This is minimum value for T1. अगर ये minimum value of T1 है, अगर ये minimum value of T1 है, तो minimum value of X क्या होगी? इस T1 का कंपोनेंट लेफ्ट पे कितना लग रहा है? T1 का कंपोनेंट लेफ्ट पे कितना लग रहा है? T1 का कंपोनेंट जो लेफ्ट पे लग रहा है, that is T1 cos 30. अगर T1 को हम 100 लेते हैं यहाँ पे 100 cos 30, that's gonna give us 100 into square root of 3/2, and that is 50 square root of 3. लेफ्ट साइड पे जो ये फोर्स लग रही होगी, नॉट दिस फोर्स, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपके पास? 50 स्क्वायर रूट ऑफ 3. T1 cos 30 जो ये वाली फोर्स है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 50 स्क्वायर रूट 3. इसको काउंटर करने के लिए राइट साइड पे फोर्स कितनी होगी? It has to be at least this much. So the idea is ये जो हमारे पास फोर्सेस हैं सारी जो हमने रिप्रेजेंट की हैं, एक्स की मिनिमम वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी? जब टेंशन 2 जो है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। टेंशन 2 को हम एलिमिनेट कर देंगे, हम कहेंगे कि टेंशन 2 T2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए. दैट इज गोइंग टू गिव अस द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्स. Khizr, why not T1? Why can't T1 be 0? That's a good question. T1 0 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि फिर इस वेट को कौन काउंटर करेगा? 50 न्यूटन को कौन काउंटर करेगा अगर T1 0 हो जाएगा? तो T2 तो नीचे लग रही है ऑलरेडी, तो 50 जो वेट है, वेट को बैलेंस करने के लिए T1 का ये वाला कंपोनेंट हैज टू बी देयर. सो वी कांट मेक T1 0. वी कांट मेक T1 0. T1 0 नहीं हो सकता, right? T2 is the extra force that was supposed to hold the block in its position. अगर आप राइट साइड पे बहुत ज्यादा फोर्स लगा दो, जिस तरह पिछले पार्ट में 100 न्यूटन थी, अब कुछ पार्ट तो T1 cos 30 T1 हैंडल कर रहा होगा, कुछ पार्ट पे T2 हैंडल करेगा. हम इस X फोर्स को इतना छोटा करना चाहते हैं कि T2 जो है वो उसकी हमें जरूरत ही ना पड़े. Okay, now another question is, Fazan is saying, won't T2 slack then? So that's the point we're basically looking for, कि किस पॉइंट पे जाके T2 में slack आ जाएगा, किस पॉइंट पे जाके. So this is basically that cut off point. 50 square root of 3 एग्जैक्ट वैल्यू जो होगी, उसके ऊपर उससे थोड़ी सी आपकी कम वैल्यू होगी तो T2 will slack, right? फ्रैक्शनली कम होगी. इससे थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू होगी तो T2 की वैल्यू 0 से बड़ी चले जाएगी. सो दिस इज सॉर्ट ऑफ द कट ऑफ पॉइंट. X की वैल्यू जब 50 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगी तो T2 will be exactly 0, right? It will still be taut, लेकिन उसकी वैल्यू 0 होगी, उसमें स्ट्रेच नहीं आ रहा होगा कोई ज्यादा, right? It will be in its in a straight position, but it will not be stretched at that point. उसमें स्ट्रेच नहीं आ रहा होगा और स्लैक भी नहीं होगा. स्लैक कब होगा? अगर आपकी फोर्स ये 50 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से थोड़ी सी भी कम होगी, तब उसमें स्लैक आ जाएगा. ठीक है? So what are we going to do here? एक तो तरीका ये है, आप इस तरह से लॉजिकली सोच लें, जो हमने ऊपर जिस तरह से सोचा कि T1 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी. T1 की मिनिमम वैल्यू हमारे पास यहां से आई, 50 न्यूटन नीचे लग रहा था. कम से कम आपको ऊपर कितनी फोर्स चाहिए? T1 sin 30 शुड बी मिनिमम 50. ठीक है? सो T1 की वैल्यू मिनिमम कहां से कितनी आ गई आपके पास? 100 न्यूटन के टेंशन in the first string and the upper string, that should be minimum 100 न्यूटन. ओके, जब वो आ गई तो हमने उसको यूज करके ये वाला कंपोनेंट निकाल लिया उसका.
T1 cos 30 100 को यूज करके। अब इसको यूज करके हम कह सकते हैं कि x की मिनिमम वैल्यू एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए 50 स्क्वायर रूट। दिस इज वन वे टू थिंक अबाउट दिस। अनदर वे इज हम उसी तरह से जिस तरह हमने पहले वो दो इक्वेशंस बनाई थी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसमें हम क्या कहें, हम वो पॉइंट फाइंड कर रहे हैं जहां पे T2 जो है उसमें बिल्कुल स्लैक आने वाला होगा, right? It will just be about to slack, right? So it's the marginal value, yes. So it's that cutoff point where T2 is just about to slack, right? It's the cutoff point that we're looking for. इससे थोड़ी सी ज्यादा होएगी आपकी x फोर्स, तो T2 की वैल्यू 0 से ऊपर चले जाएगी। अगर 50 स्क्वायर रूट 3 से थोड़ी सी नीचे होगी तो स्ट्रिंग के अंदर स्लैक आ जाएगा, वो स्ट्रेट नहीं रहेगी। सो दिस इज द कट ऑफ पॉइंट जहां पे आपकी स्ट्रिंग स्ट्रेट रहेगी और उसमें स्लैक नहीं आएगा, लेकिन टेंशन 0 होगी, बिकॉज इट जस्ट it will not be applying any force on the block anymore. उसमें स्ट्रेच नहीं होगा कुछ, ठीक है। तो दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे T2 की वैल्यू को 0 इनपुट कर सकते हो, बिकॉज ऑफ दिस रीजनिंग दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। T2 को 0 इनपुट कर दें, उससे देखने आपके पास x की वैल्यू क्या आती है। इफ यू वर टू इनपुट T2 इक्वल टू 0 हियर, you get T1 cos 30 equals x, and here you get T1 sin 30 equals 50, and again T1 comes out to be 100 from this. You put that in the first equation and that gives you 100 cos 30 and x equals 50 square root of 3. So these are two ways of thinking about this. Okay. Yes, Fazan, that's correct. T2 is only needed to balance this x Newton force. लेकिन T1 के दो काम है। T1 इसको भी बैलेंस कर रही है, x न्यूटन को भी, लेकिन वेट को भी बैलेंस कर रही है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम कह रहे हैं कि अच्छा, since we want x to be minimum, हम लेफ्ट वाली फोर्स मिनिमम रखना चाहते हैं। यानी लेफ्ट वाली फोर्स जो है, हम कहते हैं सब काम T1 से ले लेते हैं, वी डू नॉट बॉदर T2 देयर। T2 वाली फोर्स को हम इग्नोर करते हैं। हम देखते हैं कि T1 मिनिमम कितनी फोर्स अप्लाई कर सकता है, हम सिर्फ उसको यहाँ पे यूज करेंगे, T2 को इग्नोर कर देंगे, राइट। T1 इज स्टिल नीडेड बिकॉज ऑफ द वेट, तो हमें वो फिर भी यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी। T2 हम इग्नोर कर देंगे, उसकी वैल्यू 0 ले लेंगे। Does that make some sense? It's quite tricky. If you still have any questions, make sure that you ask so that you have some clarity about why we are putting T1 0. Your questions इसमें बता दें मुझे। Is that okay? Okay, the question is, what if they had asked about the maximum value of x? Well, we don't know. Maximum value का मतलब है कि आपकी x फोर्स जितनी मर्जी राइट पे ज्यादा हो जाए, अब वो डिपेंड करेगा कि आपकी स्ट्रिंग कितनी स्ट्रांग है। लेट्स से मैं 1000 न्यूटन अप्लाई कर देता हूँ राइट साइड पे, मैक्सिमम बेसिकली वो पॉइंट होगा जहाँ पे जिस पॉइंट पे जाके स्ट्रिंग आपकी ब्रेक कर जाएगी। नाउ वी डोंट हैव अ मेथड ऑफ फाइंडिंग दैट, वो स्ट्रिंग की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि वो कब ब्रेक हो जाएगी, राइट। सो यू कांट फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू हियर, देयर इज नो वे टू डू दैट, वो स्ट्रिंग की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। ओके, yes, so these are two different ways of doing this. या तो आप इसको लॉजिकली, हमने ऊपर लॉजिकली सोचा उस तरह से, नीचे हमने इक्वेशन बना के सोचा हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। Question number 4, let's start with this. The diagram shows a block of mass 10 kg suspended below a horizontal ceiling by two strings AC and BC of lengths 0.8 meters and 0.6 meters respectively. Okay, आपको डिस्टेंस नजर आ रहे हैं वहां पे, 10 kg इसका मास है, all of that is given.
Angle ACB is 90. That's also given here. Horizontal force of -F Newton acts as a block. The block is in equilibrium. Okay. बाकी सब कुछ आपको डायग्राम पे नजर आ रहा है. इसने बताया हुआ block is in equilibrium. Okay. In the case where F equals 20, find the tensions in each of the strings. Okay. F की value is 20 ready. So this is 20 in this part. What forces do we have? We have a downward force. What is that force going to be? 100 Newton. That's the weight of this block. Block के ऊपर कौन सी forces लग रही हैं? Right side पे 20 Newton लग रहा है. Downwards 100 Newton लग रहा है. What else? We have tension in this direction. Let's call this T1. We have tension in this direction. Let's call this T2. These tensions are going to be different. Why? Because ये आपकी इस block के साथ जो strings हैं, they are tied to this. Right? Block के साथ हैं. जब कोई ring होती है, उसके through अगर string pass कर रही हो, single string हो, तो उसमें आपकी जो है टेंशंस इक्वल हो सकती हैं. यहाँ पे तो आपकी स्ट्रिंग्स भी दो डिफरेंट हैं. जब डिफरेंट स्ट्रिंग्स होती हैं तो उसमें तो आपने इक्वल टेंशन अज्यूम नहीं करनी है. ओके, सो दीज आर डिफरेंट टेंशंस बिकॉज़ दे आर टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स. We need to find the tension in each of the strings. Let's find those two tensions. क्या करेंगे? सबसे पहले उनको रिजॉल्व करेंगे. रिजॉल्व करने के लिए उसने आपके डिस्टेंसेस दिए हुए हैं कि आप उनसे एंगल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं. ठीक है, सो 0.6 और 0.8 ये राइट एंगल ट्रायंगल है. हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? इसमें आप पाइथागोरस यूज करेंगे. It's 0.6 and 0.8. हाइपोटेन्यूज का आप चेक करेंगे 1.0 आ जाएगा. ठीक है, आप वो ट्राई कर सकते हैं. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1 आ जाएगी. एंड लेट्स कॉल फॉर इंस्टेंस दिस एंगल थीटा नाउ. अगर इसको हम थीटा कह लेते हैं या इसको हम कोई और नाम दे देते हैं. लेट्स कॉल दिस अल्फा एंड लेट्स कॉल दिस बीटा. Or maybe we don't have to consider these separately. It might just work without that. Yeah, let's not consider them separately. Let's call this alpha. Just सिर्फ alpha consider कर लेते हैं. If this is alpha, alpha का sin alpha क्या हो जाएगा? इसके opposite 0.6 over hypotenuse. That's 1. So 0.6 over 1. That's the 0.6. Sin alpha is 0.6. Cos alpha क्या हो जाएगा? Cos alpha in this case is going to be adjacent, that's 0.8, over hypotenuse, that's 1, that's 0.8. Cos alpha 0.8 हो गया. दूसरा एंगल पे मैं मार्क कर लेते हैं. It's going to make things simpler. Let's say this angle is beta. उसके लिए आप फाइंड कर लें. Sin beta क्या हो जाएगा? Opposite is 0.8 over hypotenuse, that's 1. Sin beta is 0.8. What about cos beta? Cos beta is going to be 0.6 here. ठीक है, adjacent over hypotenuse. This is cos of beta. Okay. अच्छा, now let's resolve these forces first of all. इनको resolve करते हैं. देखते हैं हमारे पास क्या आता है इससे. T1 के components, let's see what they turn out to be. Tensions के components क्या हो जाएंगे? एक component आपको लेफ्ट साइड पर होएगा. T1 का इसका हम different colors में दे देते हैं. Let's call this, represent this with orange and represent this with some other color. Okay. T1 के components. अब देखिए ये angle अगर alpha है, what about this angle? This is also alpha. और अगर ये angle beta है, what about this angle? This is also beta. ठीक है, तो इसके T1 के components क्या हो जाएंगे? T1 cos alpha और ऊपर वाला component क्या हो जाएगा? T1 sin alpha. अच्छा देखें, डिस्टेंस हमने यूज कर लिया, उनको कोई जरूरत नहीं है. उनको बेशक आप यहाँ से कैंसिल कर दें, उससे कंफ्यूज नहीं होना. ये यहाँ से मिटा दें. दे आर नॉट रेलेवेंट एनीमोर. वो सिर्फ एंगल के लिए दिए होते हैं. एंगल्स हमने फिगर आउट कर लिए हैं, उनके साइन और कॉस की वैल्यूज. द डिस्टेंसेस आर नो लॉन्गर रेलेवेंट. ओके, तो क्लटर खत्म करने के लिए आप उनको बस साइड पे कट कर सकते हैं. दूसरा कंपोनेंट हमारे पास आ गया T1 का, T1 sin alpha. ठीक है, इसी तरह से हम T2 को रिजॉल्व कर लें. एंगल के साथ वाला कंपोनेंट उस पे cos लग जाएगा. सो वी हैव T2 cos beta. और एंगल के दूसरी साइड वाला कंपोनेंट, this is going to be T2 sin beta. ठीक है, ये हमने सारे कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर लिया. नाउ ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम. ऑपोजिट फोर्सेस को बस इक्वेट कर दें और देखें आपके पास क्या आता है. राइट वाली फोर्सेस ये हैं, लेफ्ट वाली ये है. अपवर्ड फोर्सेस और T2 sin beta, T1 sin alpha, एंड डाउनवर्ड इज 100. क्या करें?
लेफ्ट वाली फोर्स को राइट वाली फोर्स का इक्वेट कर दें, इक्विलिब्रियम में, राइट, और अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स का इक्वेट कर दें. What are the forces acting towards the left? We have T1 cos alpha plus that is equal to the forces acting to the right, T2 cos beta plus 20. Okay. Upward forces are T1 sin alpha and T2 sin beta. Downward forces 100. ये दो इक्वेशंस आ गई आपके पास. अब cos alpha, cos beta और sin alpha, sin beta की वैल्यूज आपको पता है, वो यहाँ पे इनपुट कर दें. Cos alpha is 0.8, so you have 0.8 T1 plus cos beta, which is 0.6, 0.6 T2, that is equal to 20. Sin alpha is 0.6, so that's 0.6 T1 plus cos sin beta is 0.8, that's 0.8 T2. That should equal 100. Solve these two equations simultaneously and you get the values for T1 and T2. Let's solve them simultaneously. इनमें से कोई भी एक वेरिएबल सब्जेक्ट बना लें. Let's do that. 0.6 T2 equals 20 minus 0.8 T1. 0.6 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, so we have T2 equals this. Similarly, दूसरी इक्वेशन में से अगर हम T2 को सब्जेक्ट बना लें, that's one way of doing this. T2 को यहाँ पे भी सब्जेक्ट बना लें, that gives us 100 minus 0.6 T1 divided by 0.8. ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं. We have 20 minus 0.8 T1 divided by 0.6, that equals 100 minus 0.6 T1 divided by 0.8. Cross multiply and see what you get from that. 20 into 0.8, that gives me 16. 16 minus 0.8 into 0.8, that's 0.64 T1. On the other side, we have 0.6 into 100, that's 60. Minus 0.6 into 0.6, that's 0.36 T1. T1 वाली टर्म्स एक साइड पे ले हैं, वो आपके पास 1 T1 बन जाता है. 60 minus 16, that is going to give me 44. All right, so the value of T1 is, no, I'm sorry, this is minus, this is plus. T1 नहीं बनता. ये जब लेफ्ट पर आएगा तो ये क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा minus 0.64 plus 0.36, that's actually minus 0.28 equals 60 minus 16, which is 44. Okay, so there's something wrong somewhere because ये negative tension हमारे पास आ रही है, जो इस केस में नहीं आनी चाहिए. वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में नेगेटिव टेंशन नहीं हो सकती है. वो कभी आपके रिजिड ऑब्जेक्ट हो तो उसमें नेगेटिव आ जाती होती है कभी. So maybe there's something wrong here. Let me just check this. Can somebody spot a careless error somewhere here? Oh yeah, so here's the error. ये देखें, यहाँ पे ये था. इस इक्वेशन में नेक्स्ट स्टेप में राइट साइड पे T2 cos बीटा था, मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके गया हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको पॉजिटिव रहने दिया. ओके, अब ये एंड पे टेंशन नेगेटिव आ रही थी ना, तो उससे हमें पता चला कि देयर समथिंग रॉन्ग. सो हम क्या करते हैं, इसको करेक्ट कर देते हैं. यहाँ पे ये जब इसको लेफ्ट पे लेके गए हैं तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, जस्ट नेगेटिव हियर. और फिर जब हम T2 को सब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास आता है यहाँ पे 0.8 T1 minus 20, right? That's what it should have been. इसको यहाँ पे करेक्ट करते हैं. This is the other way around. 0.8 T1 minus 20. Cross multiply किया, ये भी interchange करना पड़ेगा यहाँ पे. That gives us 0.64 T1 minus 16. And now that comes to the left side, और वहां से ये T1 बन जाता है. Or 60 plus 16, that actually gives us 76 Newton. And that's what the tension is supposed to be here. Okay, T1 की वैल्यू हमारे पास 76 Newton आती है यहाँ पे. ठीक है? Okay, yeah, Hussein, I'm sorry, I saw your message later. Yeah, so thank you for that. T1 is 76 Newton. Acha, let's put this value back in T2 and see what that gives us. T2 is equal to 100 minus 0.6 into 76.
डिवाइडेड बाय 0.8, ये इवैल्यूएट कर लें, आपके पास T2 आ जाएगा। ठीक है, 100 minus 0.6 into 76 divided by 0.8, and that is giving me 68. The second tension turns out to be 68 Newton. This is what we were looking for, T1 and T2. ठीक है, tension find कर लिया आपने? That was the first part of this question. All right. Achha. Let's look at part B now. It says find the greatest value of F for which the block remains in equilibrium at the position shown. Okay. अब देखें इस part में F की value 20 नहीं है। अब देखें उसने first part में क्या लिखा हुआ था? In the case where F equals 20. First part में उसने कहा F की value 20 है। Okay. That value 20 is not relevant for the next part. That 20 is not relevant for the next part. अब next part में क्या होगा? Okay, right side वाली force को, ठीक है? Now what I'm going to do for this is I'm just going to copy this diagram here. So we have this in front. Okay, so this is what it roughly looks like. ठीक है? अब टेंशन की वैल्यू उसने आपको F की वैल्यू 20 आपको नहीं दी हुई है, आपने इसको F की टर्म्स में ही रखना है for now. Now the block remains in equilibrium. इसका मतलब है कि upward force और downward force equally होंगे अभी भी, और left वाली force और right वाली force अभी भी equally होंगे। तो जो दो equations हमने ऊपर बनाई थी ना, they are still relevant. These two equations are still relevant as they are, except के 20 की जगह पे हम F लिख देंगे, ठीक है? और let me actually use this version जब हमने उनकी values input कर दी हैं, 0.81 minus 0.62. Let me write that here. 0.81 minus 0.62, that is equal to 20. यहाँ पे 20 नहीं है, यहाँ पे F है, तो इसको हम कह देते हैं this is equal to F. This is one equation that we had. Okay. अच्छा. What's the second equation? The second equation that we have is 0.61 plus 0.8 T2. That is equal to 100. ठीक है? अच्छा. अब देखें आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई. उसने क्या कहा है? Find the greatest value of F. Find the greatest value of F for which the block remains in equilibrium at the position shown. अच्छा देखें, F की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे तो इवेंचुअली क्या होगा, ये F अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये ब्लॉक इस तरह से थोड़ा सा ऊपर को चला जाएगा, राइट? क्योंकि राइट साइड वाली फोर्स ज्यादा हो जाएगी तो ये ब्लॉक थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, और ये आपकी स्ट्रिंग जो है T2 ये टॉट नहीं रहेगी. इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस. आपके जो ये सिचुएशन है ना, कुछ ऐसी बन जाएगी कि B थोड़ा आपका ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर जाएगा, A तो ऐसी टॉट रहेगा, लेकिन क्योंकि आपका ब्लॉक ऊपर मूव कर गया है और वो पॉइंट B जो था ऊपर, दैट वाज अ फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ पे एक तरह से ये स्ट्रिंग टॉट नहीं रहेगी. सो इट्स गोइंग टू हैव it's going to be slack like this. Okay, अगर F बहुत ज्यादा हो जाए. So what we want is we want कि ये स्ट्रिंग जो है ये स्लैक नहीं हो, ये स्ट्रेट रहे. ठीक है, ये स्ट्रिंग जो सेकंड स्ट्रिंग है जो B पे आ रही है वो स्लैक नहीं हो, वो स्ट्रेट रहे, वो इसी तरह से पोजीशन में इक्विलिब्रियम में रहे. तो क्या होगा, आप अगर F को इंक्रीज करते जाओगे तो इसको इस पोजीशन में रखने के लिए आपकी T2 की वैल्यू कम होती जाएगी, राइट? बिकॉज अब उसको स्ट्रिंग को इतना जोर नहीं लगाना पड़ रहा, ये F उसको उस पोजीशन में रख रहा है ऑलरेडी, राइट? तो F आप इतना ज्यादा कर दो
कि टेंशन ये वाली कम होती जाए। अब ये कम होते होते कहां तक जा सकती है मिनिमम? T2 कम होते होते मिनिमम कहां तक जा सकती है? 0 तक जा सकती है, उससे नीचे तो नहीं जा सकती है। 0 जब होगी तो उस पॉइंट के ऊपर अगर आपने थोड़ी सी भी और फोर्स F इंक्रीज की तो उससे क्या होगा? ये स्ट्रेंथ स्लैक हो जाएगी इस तरह से, ठीक है? तो पॉइंट जहां पे F की वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी वो कब कब होगा? वो वाला पॉइंट जब T2 की वैल्यू जो है ना ये 0 के इक्वल होगी। ओके, आई होप दैट मेक्स सेंस। दैट्स वन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस। आपने करना क्या है? T2 की वैल्यू को यहाँ पे 0 इनपुट करना है। ओके, another way of thinking about this could be that you look at this equation. If you don't want to think about the diagram there, उसमें ज़्यादा logic use करना मुश्किल हो रहा है। The other possibility could be that you look at this equation and see कि F कौन सी equation में है। What you want to do is you want to maximize F. F को maximize करना है, ठीक है? F को maximize करना है। अब देखें, अगर इसको हम रीअरेंज करें इस इक्वेशन को, 0.81 equals F plus 0.62। ये हमारी फोर्सेस हैं जो लग रही हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट पे जो फोर्स लग रही है वो ये लग रही है। राइट पे कौन सी फोर्स लग रही है? F लग रही है। अगर इसको हम रीअरेंज कर लें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट अपना इक्विलिब्रियम में, ऑब्जेक्ट आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा जब ये इक्वेशन होल्ड करती है। अब ये इक्वेशन होल्ड कब तक करती रहेगी? जब F और 0.62 की T2 का सम 0.81 के इक्वल होएगा। इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज F, अब देखिए 0.8 T1 की वैल्यू तो ज्यादा चेंज नहीं होगी ना, वो तो T1 पे डिपेंडेंट है। राइट साइड पे आपके पास F प्लस 0.62 है। तो आपने क्या करना है? इन दोनों के सम को, F और 0.62 के सम को इससे इक्वेट, इसके इक्वल रखना है। अगर आप F को मैक्सिमाइज करते हो तो T2 को क्या करना पड़ेगा? इसको कम करना पड़ेगा, बिकॉज ये आर्बिट्रैरिटी बहुत ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। अगर F को ज्यादा करेंगे तो T2 कम होना पड़ेगा। अब T2 कितना कम हो सकता है? T2 कितना कम हो सकता है? T2 मिनिमम भी चला जाए तो 0 हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो T2 की वैल्यू हम क्या करेंगे? उसको हम 0 इनपुट करेंगे फॉर दैट रीजन। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे ये, हम कहेंगे लेट्स इनपुट T2 इक्वल टू 0। अब T2 इक्वल टू 0 यहाँ पे इनपुट करते हैं तो उससे तो हमारे पास T1 भी है वहां पे। अगर हम सेकंड इक्वेशन में इनपुट कर दें उससे हमारे पास T1 आ जाएगा। 0.61 plus 0.8 into 0 equals 100, and T1 turns out to be 100 over 0.6, which is 166.6667। T1 ये आ गया। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दें और उससे आपके पास F की वैल्यू आ जाएगी 0.8 into 166.667 minus 0, because वो 0.6 into 0 हो जाएगा, equals F. Evaluate this and see what that turns out to be. This into 0.8, and this is giving me 400 over 3, which is 133.3. So the greatest value that F can have is 133.3 Newton. Okay, Hussein, it is still taut, but it's kind of at the point of becoming slack. ये एक तरह से वो कट ऑफ पॉइंट है, राइट? वो एक्सट्रीम पॉइंट है कि ये बिल्कुल उस पॉइंट पे पहुंच गया कि अब थोड़ा सा भी आपने इस फोर्स को ज्यादा किया ना तो T2 स्लैक हो जाएगी। ये बिल्कुल अभी अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे है कि इसकी टेंशन 0 हो गई है और ये अभी भी स्ट्रेट है, सिर्फ इस वजह से कि बस F अभी इतना ज्यादा नहीं हुआ कि ये स्ट्रिंग स्लैक हो जाए। स्ट्रेट है लेकिन इसमें टेंशन 0 हो गई है। ओके, थोड़ी सी भी F ज्यादा होगी तो ये स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी। सो दिस इज लाइक द कट ऑफ पॉइंट after which the string will become slack. Okay, I hope that makes sense. You'll find similar questions in other recent papers as well. आपको मोस्टली यही करना होता है, किसी टेंशन को आपने 0 के इक्वेट करना, 0 से इक्वेट करना होता है वो एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करने के लिए एक तरह से, राइट? देखिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा लॉजिकली ऑफ कोर्स के किसको 0 करना है। आप या तो डायग्राम सोच के इस तरह से लॉजिक यूज कर सकते हैं या फिर आप इक्वेशन यूज करके देख लें कि अच्छा अगर आपने F को मैक्सिमाइज करना है तो किसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। T1 मिनिमाइज करेंगे तो वो तो F मिनिमाइज हो जाएगा, राइट?
वी वांट टू मिनिमाइज T2 कितना मिनिमाइज हो सकता है, मैक्सिमम भी 0 पे जा सकता है, राइट?